Welcome, guys. Welcome to United Bedtime Talks. Let's get into it. Let's get into it. कल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है. एक मैच जहाँ पर हम 3 पॉइंट्स ले सकते हैं. There's some echo. किसी का ऑडियो चालू है. So tomorrow, United is playing Watford. तो आज का एजेंडा क्या है डिस्कशन का? पहले मैं ठीक ठीक कर लेता हूँ. मेरा स्क्रीन में बहुत ही अच्छे से विजिबल हूँ. Just give me a second, guys. Yep. So tonight we're gonna discuss United's lineup, Watford's lineup, predictions, analysis की how the game will go. उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि रोनाल्डो का फ्यूचर क्या है after his latest comments, which has put a massive doubt, which was already there, that rumblings हम सुन ही रहे थे कि Ronaldo might not stay for the next season, but coming from him directly, it's a big news in my opinion. Not a surprising one, but a big news. और जो बीच में प्लेन जाने की आवाज आती है वो प्रत्युष के घर से आती है. You guys can blame him. ठीक है. Apart from that, Ralf Ragnick was spotted with Paul Mitchell, Monaco's director. What's cooking? Are we gonna sign Badashile maybe? Or we are going to change the director of football only. Please get ready. Get ready for this. Get ready. Okay, let's get into it. Let's start with that. सुन ना. Go on. जो मैं बोलने वाला वो सुन. This guy worked with Mauricio Pochettino at Southampton and Tottenham. हाँ. ठीक है. So finally he's making progress in life. See, ये ठीक है Mauricio Pochettino, but फिर वो किस रोल में आएगा? If Mauricio Pochettino is also coming, he has worked with him as a director of football, right? He was director of football जहाँ पे Southampton और Tottenham में था. United में तो already director of football है, तो किस रोल में आएगा? Deputy director of football जिसका बात चल रहा था. I think more of a जिस हिसाब से reports आ रहे हैं वो as a second DOF, मतलब maybe we are trying to have Murtog and him working together for the transfers. It's just my guess. Just tell me, कितने players, कितने लोग एक काम के लिए लगेंगे? Ralph is already there. We are going to appoint a deputy director of football. We have got Fletcher, we have got Murtog, and then we are going to hire somebody else to do that job also. मतलब ये इतना बड़ा जॉब तो नहीं है ना? बहुत confusing at this point. We really don't know कि भाई what's the rationale behind it and who is मतलब कौन से position पे at what point is going to be there. No idea. As things are with this club, everything is confusing and everything is chaotic. So it isn't a surprise. Yeah, there is just no vision. कोई vision ही नहीं है, तो फिर क्या रहेगा? I still think that this is work in progress. Rangnick might be looking for a third person opinion about what this guy thinks has been his way of working till now since he's arrived. I think he doesn't want to take feedback from anyone in the club about what's happening. He wants to get a third eye from outside. कि भाई तुझे क्या लग रहा है? How does it look from the outside? So Someone who he trusts basically. अभी वो नहीं पता कि रैग्निक और मर्टॉग का कैसा रिलेशनशिप है, but I guess वो यही है कि he wants Paul Mitchell. Maybe he wants Paul Mitchell just for the कि भाई ये टारगेट है, what's your thought about it, and then if उन दोनों का अप्रूवल सही है, they'll move forward with it ऐसा. Or it may simply be that we are talking about a sporting director. अपना sporting director कौन है? अपना तो जॉन मर्टॉग है ना इस समय, अगर जो है. फ्लेचर नहीं, कौन है sporting director? फ्लेचर तो टेक्निकल डायरेक्टर है, राइट? इस समय This just shows हमारा फुटबॉल क्लब कैसा है. Nobody knows what roles they are playing. Exactly. It's so confusing. Exactly. It might be regarding Murto probably, or it might be. Murtog ही लग रहा है क्योंकि Fletcher is in the role of as a technical director more of the वो वाला I have a designation. different theory on that. Okay. कि Fletcher को
they will keep on ground rather than as a director for But trainings, for match days. does this mean that Pochettino is more or less final, given that Mitchell is almost I always don't around think so. him? I don't think Almost so. always around him. Like I was reading up the other day, he has been with him at Southampton. He has been with him at Spurs. So first time वो दोनों अलग है. And now with the Poch rumors which have been going on for a long time now, especially वहाँ का environment भी it is not that good. So you can expect him to leave PSG. Yeah, it makes sense, So Paritosh. रियूनियन टाइप हो जाएगा. मीत आंसू बहाएगा, चूड़ियां तोड़ेगा, हाँ, बहुत मजा मीट आएगा. suicidal लाइट tendencies हो लाइट जाएंगी दिखेगा इसको. सबसे. it just feels that Poch everything is setting up for Pochettino coming Aligned back. for Poch to Yeah, United exactly. because both. Especially with Mitchell. हाँ मतलब there have been countless reports कि since a long time both Manchester United and Poch have been very attracted to each other. वो कभी वो stars align नहीं हुए. अभी literally ऐसा लग Hmm. रहा है कि भाई stars align हो चुके हैं कि with Ragnick, with apparently अभी Paul Mitchell भी आ रहा है तो and हवन with things. सक्सेसफुल हो रहा है. हवन सक्सेसफुल हो रहा है. कुंडली मिल रही है. हाँ कुंडली मिल रही ऐसा ही चालू है इनका. Finally मिल रही है ऐसा लग रहा है. है. हाँ वही. अरे हम तीनों के लिए प्रोबेबली फाइनली होगा. मीत के लिए तो वर्ल्ड वॉर 3 से भी बड़ी चीज है. बड़ी चीज है हाँ. लाओ जिसको लाना है लाओ, बेस्ट है. अमेजिंग. सो काफी परितोष के फैंस आए हुए हैं. Vivek says he's a big fan. Big fan. Joe says keep up the good work. Thank you. So let's get into it. Let's get into the press conference. He was asked about Russia and Ukraine situation, where he said that it's not ideal at all for anyone, the loss of lives and everything. Um, UEFA has moved Champions League final from Russia to Paris. Paris. I mean, we all know Paris is, like second home for Manchester United players. So good signs. Good signs. Rashford And I'm यहाँ भी sure कुंडली Paris में यहाँ भी कुंडली मिल रही है. यहाँ पे कुंडली मिल रही है. Rash, पेरिस नहीं खेलेगा फाइनल. That's given. Rashford winner in Champions League final ये after the season भाई what he's had. स्टार्ट भी करेगा या नहीं वो भी नहीं पता. नेक्स्ट गेम. Start करे ना करे, there is a real possibility that it might happen. Who knows? But इतना pathetic खेले कल का game. He was asked about it कि how do you feel about the last night's game, and he was also it was also talked about कि the new Anthony Langa chant, rhythm is a dancer. So it comes from a German dialect, by the way. He was like, it was not down to Anthony Langa. It took a moment. Headlines were on him, but Nemanja Matic made a huge difference. True. You All can of see us- in games exactly a All of proper us have been DM. crying out for a DM for I don't know how many years. How many years? Time and again, it is proved that how much valuable it is. Fred, it's Fred is laughable not a now, DM. watching Fred is Fred. not a DM. बस हम लोग फ्रेड को जज करते हैं इन अ पोजीशन दैट ही इज नॉट अ प्लेयर ऑफ. उसका फोर्टे नहीं है एज अ डीएम. वो तो वहां पे उसको मैकटोमिनी जज का भी करना वही सही है. बात नहीं है. वो तो एग्जैक्टली मिडफील्ड में से कोई भी डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं नहीं है. है, तो उसको Actually, वहां उस पोजीशन पे जज करना गलत है. Matic is the only guy who is the DM guy प्योर actually. सोल डीएम. हाँ. Right, Exactly. Yeah, and his Yeah. legs are gone. 20 minutes is the max you can get out of him in a game, which we got out in Atletico match, and we got a result. I mean, at least we are in the tie. So, uh, but that's the thing. At home पे भी क्या करेंगे? It is going to be Fred and McTominay. So, and the whole season. I mean, you look at the fixture list. So you can't expect Matic to play at least 70% of the matches. And even if he does Yeah. 50 minutes खत्म हो गया, उसकी game वहीं पे खत्म हो गई. And then it will be the same old. So I'm hoping कि अपने एक DM sign करे, someone who can actually pass the ball. But I am not 100% sure we will do it because we have never been going to get those players which we need. So most probably अपने एक center mid लाएंगे जो Fred या McTominay जैसा होगा. And then we'll be again crying about how we are missing out on a DM. I think last summer में ही we should have gone
for DM, and Exactly. they've realized that. They've realized that, I and they think will उससे भी last summer पहले की also. I get it. I think उससे पहले की भी need has been going on since Because as fans what we were expecting कि चलो सैंचो तो अब तो होगा ही, ठीक है, इसके अलावा अब हमको चाहिए एक डीएम, एक सेंटर बैक, डीएम चाहिए, सैंचो है के ना, बाद यही डीएम था शुड हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड। बहुत सिंपल सी एग्जैक्टली। बात थी और लास्ट समर। उसमें दे वेंट एकदम ही कि चलो अभी कर लिया, निकाल लिया हम लोगों ने 90 मिलियन जो भी है, अब रुक जाते हैं, थम जाते हैं थोड़ा, उधर रुकने में ही नहीं सीजन खत्म मतलब हो गया अपना। नहीं, I honest पीआर लाइन तो ये था ना कि पॉगबा है, वीडीबी है, हम लोग वी नीड टू सॉर्ट वही देयर फ्यूचर्स आउट बिफोर साइनिंग अ डिफेंसिव मिडफील्डर। and we need to have outgoings before getting a new player in. But then we ended एग्जैक्टली up paying over the top for. I don't want to name that person because I will get a lot of hatred here. But we paid over the top for someone with a wage that is astronomical, and we are not getting the output there, right? We were told that he will change the game. I can understand why we got him, uh, Mr. CR7 himself, but Abhi, it feels like it was not something that should have been done. Like in hindsight, I used to think that way, Paritosh, and but when I saw stats that without his goal we'll be fucked, without his goals, but count that's the out his thing. goals Like this season. I agree, but if you look at 2022, he has one goal in 9 games. He has played over 600 minutes of football, has one goal, missed a penalty, and technically the only time that he moved away from center forward was when Anthony Alanga scored. I get that he was the one who pulled Savage out of position. I agree with हाँ, you, but the thing is that you need more from him. If you are paying that many wages, if he's starting every game, you need a goal, you need an assist, you need to affect games like this. Ronaldo is not just a poacher. He, according to me, he's more of someone who thrives on delivery. If he gets He delivery, thrives on you can delivery. you Exactly. can you can you can see the change in him. You can, if he gets, वो मिलना तो चाहिए ना set pieces में, क्योंकि अभी he can एक take the leap, क्लिप he can हाईलाइट हो रही I थी। think it's both. उसको काफी chances भी मिला है. He has no doubt, missed very easy goals. no Very doubt. easy हाँ, goals but if we look from at his the standards. Atletico Madrid game, if I just look at the Atletico Madrid game, there's this clip rounding off on Twitter and everywhere where वहाँ लेफ्ट से बॉल आ रहा है, पता नहीं मतलब रोनाल्डो का दूसरा हाइट के भी ऊपर से जा रहा है वो बॉल, फिर राइट से बॉल आ रहा है, रैशफोर्ड दे रहा है, वो भी मतलब रोनाल्डो को 2 बार डाइव आगे मारना पड़ेगा टू क्रॉसिंग ही इतनी टट्टी है गेट अ भाई, हेडर। क्रॉसिंग डिलीवरी थोड़ा कोशिश तो करो, एटलीस्ट उसके नजदीक भी And then जाओ, he's मूवमेंट reacting दिखे, कि give me one chance here, one give me ball, one chance one here. ball, fucking one ball. So it's both ways, Paritosh, I feel. No, I agree with you. I Uh, think we never had the problem. It is not a problem with Cristiano Ronaldo. It's just that हमारी team ready नहीं थी to support Yeah, him from what he needs. Like yeah, we were I not think ready across the board, and it's detrimental now to us more than and वो क्या symbiotic है. You see Ronaldo frustrated on the pitch as well, so it is not helping overall the whole no doubt. game as well. That because he's moving around all pissed off, saying मुझे क्यों नहीं दे रहे chances, do this, do that, and he himself can't do a lot of things that we expect or we want him to do, and because we don't have the quality everywhere else. Yeah, agreed. Plus, it's his age also. We should be and considering other Yeah, he has things lost now. his You legs. know, He has yeah, lost his legs. He can't run. He can't dribble. It's done. You can't no. even expect to do any of that. It is just that And he's not doing the basic things, which sometimes frustrates me, honestly. कि वो कभी-कभी he has to drop back. He drops back because ball नहीं मिलता उसको. But by dropping हाँ, back, हमारे किसी स्ट्राइकर में इतना टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं है कि वो instincts स्पेस नहीं ऑक्यूपाई है। करे. yeah, तो प्रॉब्लम क्या Exactly. होता है कि हम पूरी डिफेंस स्टेप अप कर लेती है, फिर करने का क्या, वैसे भी मिडफील्ड हमारा कंप्रेस्ड है, उसमें और हम कंप्रेस yeah. करने को दे रहे, तो ब्रूनो है, पोग्बा है, पीपल हु थ्राइव ऑन स्पेस आर डिवॉइड ऑफ स्पेस, एंड देन वहां Yeah. घूम फिर के वही हो जाता है कि वी आर लूजिंग द क्योंकि बॉल, वो स्पेस वापस रोनाल्डो अटैक, ऑक्यूपाई लूजिंग द करता बॉल है। वापस. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो And बहुत if you see प्रॉब्लम the हो जाता है. if you see Elanga's goal also, it was a run. It was a brilliant run that he made. I mean I agree with you that I don't think Ronaldo would have made that run. वो position में एग्जैक्टली. होता तो भी. Yeah, I get it. Yeah. Hmm. And no, Bruno but got the ठीक space. है. As soon as he got the space, he delivered. So you need to give Bruno space. Like we saw it with Rangnick's thing as well. When he played that 4-2-2-2 thing, Bruno could not play there क्योंकि उसका वो Yeah. game नहीं है. As soon as he shifted to the position where Bruno got space, all of a sudden you are seeing the goals and assists flowing from 4-3-3. him. Exactly. Exactly. You get this. ये Bruno gets space, he kills. ये सब कुछ बढ़िया है, ये सारा चीज बढ़िया है, बट प्रॉब्लम घूम फिर के वही मिडफील्ड में ही आता है ना आपका. बिकॉज I agree. व्हाई इज रोनाल्डो टॉपिंग बैक, व्हाई इज रोनाल्डो टॉपिंग डीप, क्योंकि उसका बॉल का सप्लाई नहीं आ रहा है.
when he is devoid of the supply, he drops deep to get on the ball. तो supply क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपके पास एक DM नहीं है. That DM that can डीएम sit deep डीएम and वो play वही the चीज है ball. कि वो जो जो रिसाइकल करने बाकी वाला नहीं है। सेंटर हाँ वही Recycle करने वाला. रिसाइकलिंग वाली बात है। सेंटर मिडफील्डर्स डीएम में ड्रॉप कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि भाई वहां से बॉल कैसे रिसाइकल करें। तो यहाँ वही जो होता है ना कि इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो, क्योंकि आप सिटी को पीछे सीजन देख लो, पूरा सीजन वो अच्छा खेली विदाउट अ स्ट्राइकर, लेकिन उनके पास डीएम था. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट अ डीएम इज. यू कैन प्ले विदाउट अ स्ट्राइकर, अदर्स कैन गिव यू समथिंग आउट ऑफ इट. लेकिन अगर आपके पास डीएम नहीं है ना, विदाउट डिफेंस यू डोंट विन एनीथिंग. सिंपल एज दैट. as City can play without a striker, we can play without a center back and difference कुछ नहीं होगा. Harry Maguire. So coming back to Cristiano Ronaldo, I'll take comments in a bit. Cristiano Ronaldo has said that he wants to play 4-5 more years at the top level. He is more matured now. He wants to be at places where he can win things, multiple things. Is it an indication to Manchester United that if you don't get your shit together, I'm going? From the perspective of Manchester United, despite his flaws, can we really afford to let him go? Can we do He that? will go. He will go irrespective of that. First of all, his comments were both ways. He also said that he's scoring goals, helping people, teams, both Portugal and Manchester United, and that's why he wants to continue like this. It can be taken both ways, and he's perfectly right in thinking that he needs to decide his future first of all, because कितना है shelf life इसमें देखा जाए तो eventually he will move. So it's just proper I think planning we that all he's knew always done. at that point हम लोग को तो सब पता ही है कि भाई चैंपियंस लीग और बस्ट है रोनाल्डो के लिए। वी गेट चैंपियंस लीग, ही इज देयर नेक्स्ट सीजन। इफ वी डोंट हैव इट, वो Yeah, निकल जाएगा। totally. वो सीधा सीधा उसके एम्बिशंस है कि भाई मुझे चैंपियंस लीग खेलना है। Yeah, दैट इज absolutely. माय टूर्नामेंट, ही हैज टू प्ले दैट टूर्नामेंट। Yep, no doubt. एंड टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट वी कांट, मतलब मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि इवन नेक्स्ट ईयर वी कांट लेट गो ऑफ रोनाल्डो, बिकॉज कवानी वैसे ही छोड़ रहा है। मार्शियल अगेन ही विल कम बैक। मुझे वी ऑल नो कि भाई वो ऑलमोस्ट सोल्ड वाले उस पे स्टेज पे मार्शियल का। मीत को लगा कि मैं फिर मार्शल प्रो मार्शल वाला कुछ बोलूंगा कि भाई उसको चांस लगे। तो वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर एंड रैशफोर्ड वी नो कि भाई वो स्ट्राइकर नहीं खेल सकता। तो वी रियली नीड चैंपियंस लीग, नहीं तो फिर हमको 2 स्ट्राइकर्स खरीदने पड़ेंगे। Fair enough. Let's get into comments for a while. Sadiq Bhai says Ragnick meeting with Monaco director. Another hoax, or are we discussing Chouamini and Badashile? More of Abir a says hoax. Hello Abir, मुझे how are लगता you? है शाओमिनी का लास्ट ईयर उसका रिलीज क्लॉज कुछ इट वाज अराउंड 40-50 मिलियन इश। नहीं, I रिलीज क्लॉज था या haven't heard about his release clause. रिलीज to be क्लॉज honest. आई एम कंफ्यूज कि या तो रिलीज क्लॉज था या तो मोनाको वाज विलिंग टू सेल हिम बिटवीन समवेयर अराउंड 40 to 50 मिलियन The यूरोस के cost we are आसपास। hearing this year is around 60 million. As per 80 मिलियन का rumors. था ना, बिकॉज 80. मैड्रिड वाज, हाँ 80 मिलियन यूरोस का वो था प्राइस टैग, बिकॉज मैड्रिड वाज क्लियरली इंटरेस्टेड एंड आई वुड स्टिल पुट देम फ्रंट रनर्स। उनको चाहिए शाओमिनी तो वो ले भी लेंगे। Vignesh says, Mohammad Bhai, Raf meeting with Paul Mitchell means only one thing: Pochettino incoming. This is not going to stop now. Honestly, बताऊं, with getting Paul Mitchell and Rangnick in the same screen basically means every single time, Yeah. whether it is BBC, whether it is Sky Sport, whether it is Twitter, now they'll be talking about Pochettino is Pochettino. done. Yeah, exactly, it's done. Like people are going Vignesh. to go crazy now. Vignesh, ये जो कहावत होती है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये झांटे हैं, घास नहीं है। फंस जाओगे, 3 साल रोने वाले हो, ठीक है? बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। I'm not gonna engage in this debate tonight. Sachin says we are a team of individuals, most expensive squad in the world, but not a team. So Second I don't most, think no? we are we the are most. not team. We are we are just not the individuals. We are the second most expensive, no? The only silver light in this whole comment. Yeah. So Soham, I want to point out something here.
we don't say Manchester United like that. Use Man United, Manchester United, words like that, not this. For this, if you want to know why this is not said, please do some research. We don't use this. CL in the next 4 to 5 years. 4 बहुत to आगे We तक 5 चल can, रहा we है. can. See, 4-5 साल बहुत लंबा समय होता है, सोहम. Anything can happen in that duration. But वही बात होता है ना कि हम वो एम लेके चलेंगे ना, तो हम उसके हिसाब से एक्ट करेंगे. अगर भाई हमारा एम जीतने रहेगा कि जीतने जीतने के लिए तो ये 4-5 साल सीजन भी पहले जीत भी सकते हमको हैं. यही लगा था विघ्नेश भाई कि हम लोग I 4-5 साल में don't शायद जीत जाएंगे. honestly अभी से बता दूं, the way we are going right now, I don't see that happening. see, Premier League तो I भूल will जाने differ का, here, because Paritosh. look at the I will quality. differ here, and Look at the I quality. will differ why. Doesn't matter. Doesn't matter. 5 years is a big gap. The I- biggest thing is ना कि जो टीम्स डाउन रहती है ना, वो ऊपर तब आती है जब कोई दूसरी टीम जो टॉप पर है वो जाती है ट्रांजिशन में. And if Pep I and agree. Klopp leaves in that 4 to 5 years, that will be a big chance for us to go to take over them. तो वो ट्रांजिशन पीरियड में ही हम ऊपर जा सकते हैं. जब हम ट्रांजिशन में गए थे तो दे टेक ओवर. जब when Yeah. Sir Alex But retired, the and we problem went here to is, the transition. but the problem here is there's always Chelsea. Look, Chelsea is a हाँ. team that plays between transition to transition. जो भी टीम ट्रांजिशन में जाती है, Chelsea जीत जाती है सब. And they It's win okay. trophies in transition as well. And the It's other okay. thing with See, us is, it's just that अपना ट्रांजिशन 10 साल से चल रहा है. अपना ट्रांजिशन 2011 खत्म से ही नहीं चल हुआ रहा है. हमारा जब फर्ग्यूसन ने ऐसा ट्रांजिशन. बोला था, हाँ, कि भाई दिस फर्ग्यूसन जब 2012 में हमारी टीम when we lost the Premier League, he said I am a dinosaur and next year you will see. I think that was the last time we even ever thought of competing in a Premier League. Like ever since Moyes came along, अपना ट्रांजिशन ही चल रहा है. Like we try. Like अभी जैसी बात हुई कि रोनाल्डो रहना चाहिए. Now if there's a probability very high that we are not going to get Champions League. Top 4 we might not come. If we don't, Ronaldo goes, Cavani goes. We need 2 strikers again. So वहां घूम फिर के वही है. 2 strikers नहीं आने वाले. We might get 1 at best. Okay, and that's then we'll why get a I'm saying DM. na. See, that's what I'm saying na. In 4 to 5 years, things can change because one the लुढ़कते पुढ़कते किसी भी तरह से we have got Ralph in, a Yeah. person who knows how to build a team. So that is a positive for us. रिटेन कर I नहीं. think सेकंड बात यही होता है ना प्रत्युष भाई, हम उसको रिटेन कर पाएंगे. मतलब लुकिंग एट द लास्ट फ्यू वीक्स, काफी सारे मैनेज, मतलब जैसे इफ यू लुक एट सम ऑफ द ट्रांसफर मार्केट देख लो, लिंगार्ड को जाने की बात है या कुछ भी, दे वर वेरी, बहुत सारे रिपोर्ट्स से Rangnick is हैदरा not going to कमाना stay के. on manager. क्षितिज एक बात पे क्लियर करता हूँ. The players that are in this team, all of them need to go if you want to win the league. All of them need to go. You cannot win league with any one of them over here. ठीक है, तो जो जा रहे हैं उनको जाने दो. You need to replace them in a proper manner. और फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को भी ऑफलोड करना होगा, उनकी जब रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा. इफ यू लुक एट लिवरपूल जो उस ट्रांजिशन से आए हैं, यू लुक एट द टीम दैट क्लॉप इनहेरिटेड एंड लुक एट द टीम दैट ही हैज नॉट. एक हेंडरसन को छोड़ के बाकी कोई प्लेयर नहीं है टीम में that he inherited. Liverpool का cleanup was brilliant. Yeah, And they did it in limited budget. भले ही खर्चा किया, but वो भी limited budget ही है compared to us. वो Correct. बार्सिलोना ने गिफ्ट दे दिया ना. Pep has built 145 million squads का. 3 times. Pep has See, built his तो- squad 3 times since he's come. Pep can 3 do बार उसका that. squad. हाँ. Pep has the money, but that's not the Exactly. only thing ना. जब Pep चल जाएगा, when Pep goes from City, जो Pep के कारण प्लेयर्स आ रहे हैं कि वो बेंच पे भी बैठने को तैयार है क्योंकि Pep उनको पता है Pep जिता देगा उनको, कुछ ना कुछ ट्रॉफीज उनको मिल जाएगा. When Pep goes, that attraction goes. तो वो 2-3 Playing प्लेयर time जो भी, आप playing एक ही time. पोजीशन के लिए बैठे हुए हैं, वो आपके पास नहीं रहेगा. वो नहीं, But squad the depth thing आपका is, खत्म होगा. City का क्या है, वही है कि City has so much money that they are going to get the players. Plus, they are Yes. going to get the best manager. Pep goes away, they will still get literally the top 3, one of the top 3 managers in the world at that time. So, Correct. City, so I would say let us not compare because we cannot fight financially with them right now. नहीं, Liverpool, और एक- I think, is the better example that we should think of how they built their team. But then again, अपने को भी बार्सिलोना जैसा 145 मिलियन का एक गिफ्ट चाहिए. होपफुली वो अपने को मिल जाए कहीं से, जो मुझे लगता नहीं, बिकॉज वी आर द वर्स्ट सेलर्स इन द लीग. अपने लाइक 20 मिलियन इज लाइक अमेजिंग फॉर अस. Yeah, So, हमारा कोई Yeah. प्लेयर है पारितोष भाई, अभी अपने पास कोई प्लेयर है 140 प्लेयर या 2 प्लेयर भी है 145 मिलियन वर्थ नहीं है. है ना, रैशफोर्ड को है बेच ना? दो, रैशफोर्ड को बेच दो. क्या? एंटोनी मार्शियल, ये तो- बलोंडी और क्लॉस. नहीं,
पैसे का Valente बात कर रहे हैं ये उसके लिए 25 भी मिल जाए बहुत है मार्शल के लिए। सी मैं वो सारे बातें सही है बट एवरी एम्पायर दैट राइजेस फॉल्स डजंट मैटर हु दे आर ठीक है ना फुटबॉल मुझे इज लगा क्रिकेट की बात क्यों साइकिल शुरू कर दी है, दैट फुटबॉल अंपायर फुटबॉल राइजेस फॉल्स। एम्पायर नॉट निकालो अंपायर ये निकालो चैट से निकालो इसको। football is a cycle. United were on the top. Now we are not over there. We are at the bottom. We will go back over there. That's the cycle of it. तो वो हमको अपना अपना बेस बना के रखता है ताकि मुझे हमको जैसे ही मौका मिले we can go that distance. All I तो am 4 hoping से right 5 now साल is that 5 years spell we get Rangnick whatever he needs. We plan how he how Yes. he wants to, नहीं तो and give him the ultimately support and the new manager the support. तो शायद he he I agree, he but won't need look, 5 years. He can do it in 2 to 3 years with our budget. He can do that it I in 2 to agree. 3 The years. point But is that is the the thing. point I is don't have confidence in the board. I don't have confidence in the board. The Yeah, point that is I will know. they support him? But I think Yeah. अगर रैंगनिक ने साइन भी किया है तो he would have taken some assurances definitely. ऐसा भी नहीं है Correct. वो he's very shrewd that way. So he's definitely मेरा taken a पॉइंट call कि भाई अल्टीमेटली उस ये समय प्रत्युष भाई कंफर्म वही करो था फिर मैं कि आता हूँ। हम लोग रैग्निक को रिटेन कर पाएंगे या नहीं फॉर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स टू इम्प्लीमेंट हिज विजन, वो टीम स्ट्रक्चर जो क्या बोलते हैं क्लब का स्ट्रक्चर बदलना है उसको वो डिसीजंस देने की इंडिपेंडेंस मिलती है नहीं मिलती है बिकॉज Exactly. That is my point as well. ट्रांसफर विंडो में देयर वाज बहुत सारे कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स थे एंड वी कुड मतलब ऑब्वियसली यार कोई भी सेन यूनाइटेड फैन वो देख ही लेगा कि भाई लोग क्लियरली राल्फ के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उस समय लगा था कि भाई ही माइट नॉट इवन सर्वाइव टिल समर बट अभी तो ऐसा है कि भाई रिजल्ट्स हैव इंप्रूव्ड तो आई गेस रह ही जाएगा। नहीं, But अभी बात I वही है have a कि massive he doubt. might try to get Manuel Akanji and change the whole defense for like shrewd signings, and the board when they see that Harry Kane is available for 150 million would just like हाँ चलो वो ले आते हैं बाद में देख लेंगे Snap डिफेंडर at तो it, कहाँ जरूरत है, and it will be the same cycle again. So personally I have zero confidence in the board. It's not about Rangnick, it's about whether or not the board will support him Board to back put his करेंगे। vision forward. Exactly. हाँ, Because they did I not would सही do it बात with है। come to one LVG. point. They did not do it with Mourinho, and they did not do it with Ole as well. To a point, they did not. Like Ole was crying for wanting Sancho. He was crying for wanting a defender. Nothing happened. So in the end, then they all he had to do was to say that no, I'm happy with this team, and this team is a good bunch of guys, and let's play. And then it went all down. So this is the three times it has already happened. So I'm just hoping the fourth time is something different. But we don't know the board. We don't know what they think. It's all about how many clicks we got on social media and not about how many points we got on the field. So Pratyush, I want to come back to your point. So there's a very famous book called Peaks and Valleys. So the basic point of that book is when you are at top, you try to prolong it by your work. Okay, you put in your work, and when you are down, there come cycles. When you are down, you put in your work. That's why your bad period doesn't last. अपना 10 साल से चल रहा है. भाई सब बढ़िया बट मौका जब मिले तुम नहीं छोड़ना है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इफ व्हेन यू गेट द चांस यू टेक इट when City We and have Liverpool will go in a transition no we have to be ready for that they will go in 2 to 3 years they are going to go into transition that will be our chance लेकिन उसके लिए हमको अपना बेस अभी से बना के रखना होगा that will be our chance I think we are set. अपने पास बहुत सारा स्ट्रक्चर है, बहुत सारा मिसिंग भी है, बट देयर इज अ गुड बेस टू बिल्ड ऑन. यहाँ से अगर 200-250 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, वी पुट इन गुड स्ट्रक्चर प्लस थोड़ा सेल करते हैं, 10 से 12 प्लेयर्स आर देयर which can be literally sold in one window and we won't see a huge change. Right? I One mean, of भाई the 200 imagine 200 मिलियन का बात 200-250 नहीं का है बहुत ज्यादा बात ऑप्टिमिस्टिक तेरा नहीं चाहिए यार prediction। 200-250 मिलियन इज नॉट इम्पोर्टेंट गेट द राइट पर्सन इन गेट द राइट प्लेयर्स इन पैसे से आप प्लेयर्स ये बहुत बड़ा इशू रहा है यूनाइटेड का कि दैट प्लेयर हैज अ प्राइस टैग ऑफ 70 or 80 मिलियन पाउंड ही विल बी वेरी वेरी गुड फॉर अस नहीं भाई जो तुम्हारी टीम को सूट करता है ना वो जरूरी नहीं है कि वो 15 मिलियन पाउंड में भी आ सकता है वो सबसे इट्स ऑल जो अबाउट बेस्ट चीज है ना पेप गार्डियोला का, he buys 40-50 मिलियन के players एग्जैक्टली usually, and हाँ they are generally better than good. Okay, they are playing at a correct. very good level, and in the squad they fit in.
Plus, they hit the right kind of, they're upcoming. Bernardo Silva It's a जब लिया था, structure. he was upcoming. It's a भाई structure. प्रॉपर Look, स्ट्रक्चर है. He knows Same what kind with of players he that wants. is what Ferguson did. That is what Yeah. Ferguson did. You really think Ashley Young or Valencia were good enough to win Premier League titles for a team being their main game? No, they were never. But playing for United, they were world class. You could feel Ashley Young could tear apart anyone, and that Antonio Valencia was unstoppable. Rafael Danny looked like a Welbeck. world class How defender. can we forget Danny Danny Welbeck? Welbeck, exactly. So that's the thing. When you bring a average player in a good structure, he becomes good. Like McTominay right now, if he's in a team with actually two good center mids playing on week in week out, and then you bring in McTominay for Leeds, rest your main guy, and McTominay sees the show, and you are like, my God, why is he not playing? But he's not playing because he's not good enough for 3 matches a week, but he's good enough for matches like Leeds. He's good enough for matches like Spurs, where it is not about how technically sound you are. It is about how much you can run, how much you can batter the opposition down. So the horses for courses. Darren Fletcher, the best example for that. McTominay, every time I look at McTominay, I think he's a spitting image of what Darren Fletcher was. Like a bustling box-to-walk defender who can score goals, who can rush into tackles, who can pass, who can do everything, but at just a certain level. So when Fletcher played with Carrick and Scholes, he looked amazing. He scored goals versus City for fun, and he was like everywhere, coming up left, right, and center. To a point where I personally still feel कि अगर वो 2009 में खेला होता तो we would have won the Champions League title. Like I still feel that, simply because we were overrun in midfield and Fletcher would not have let us done that, because that is where we were lacking. Like Carrick was being made a puppet in that game by Xavi and Iniesta. So that is the thing. McTominay is that. But अगर आप McTominay को ऐसा बोलो कि भाई तू 90 minutes 3 games a week खेल versus Atletico Madrid versus Liverpool versus Chelsea, तो वो नहीं कर पाएगा, and he will fall and we will have issues. But अब दूसरा कुछ भी चीज ये है ना, एथलेटिको गेम में we missed him. हाँ, we desperately missed him. We needed McTominay. For once I missed McTominay. क्या बोलते कि भाई यहाँ जरूरत है उसकी McTominay की. The thing that has changed at United now, we used to buy young players and make them superstars. Now we are trying to buy superstars, and that's the big difference. That's the big difference. And that's we have the to go thing back I to hope buying young under players Ralph and make will them change. superstars. And Yeah, I because very that hope is what under City is Ralph doing. will change. That is what City is doing. That is what Liverpool are is doing. Yeah, they are not buying superstars. They are just getting the persons in and they're making them superstars. So Luis there's a Diaz question isn't a for all of superstar by you. any means. They got him There's for a a very question. good amount. Do you guys see Axel Tuanzebe next season? No. There are actually two good No. questions there. There's a question on Garnacho as well, and there's a question on Alex Tuanzebe. But personally, I feel Tuanzebe is done. Doesn't look like a top 6, top 8 defender. Has a lot of issues, plus is injury prone. So it's done. Garnacho, it's very early. Let him develop. He's still a Garnacho very early. Very early. And I hope he's not brought into the first team. Please, नहीं. Exactly. Same नहीं here. अभी he needs another season in the मतलब जहाँ भी खेल रहा है, and then a loan. Then I guess 1-2 साल लोन पे जाना चाहिए. उसके बाद I guess he'll be ready. क्योंकि अब you see I think most of these Chelsea loanees. You look at Mason Mount, you look at Reece James. Gallagher. They have spent a considerable amount of time in Championship and on loan clubs, as well as spending time in the Chelsea under 18s. So there is a reform coming, na? I'm not sure. I read somewhere that from next season you can only loan 6 players, loan out and loan in 6, respectively. But that's first team, so not the First under team, 18 reserves thing. So Chelsea will still do their thing, so it's not a huge difference for them. But yeah, look, Chelsea's loaning process, their academy process is the best in the world. We know, like every United fan knows from 2010 this has been happening. They get in players every single time. I mean, next year I'm pretty sure Mason Mount and Noel Gallagher are going to play together, and it's going to be like he's lighting up fit for Crystal Palace, and he's going to be Chelsea's first team next year. Noel नहीं है वो. Noel तो वो गायक. Noel नहीं है. वो तो गायक है. मैं भी like Corner. फिर मैंने बोला जाने दो. So he's lighting it up for Crystal Palace. So that's the thing. अपने को गार्नर के साथ वही करना है. Like the only person I think from our academy next year in the squad along with Alenga, I think will be Garner. He should be in and around the squad if he's not going out on loan to a Premier League club, I would say. Premier League club मिल रहा है तो जाने दो. फिर Fulham जाने दो उसको. चाहिए गार्नर को. I agree,
पर प्रीमियर लीग लोन ही चाहिए. अगर चैंपियनशिप लोन मिले तो जाने का मतलब नहीं है. जाने का पॉइंट नहीं, क्योंकि नॉटिंघम इज डूइंग pretty good at नॉटिंघम इस समय तो. Yeah, exactly. Some other names that are in the discussion: Daniel Levitt, Deshaun Bernard, Terran Mangi could have a chance, as our fifth centre back. Defenders, Eric it's very Bailly, hard. बहुत Center backs, it's very hard. not particularly उतना hard, but again टेडन मैंगी के इंजरी इश्यूज बहुत ज्यादा. You just like Tuanzebe, मतलब we haven't actually seen Are him. you talking about Ethan Ladd or Terran Mangi? टेडन मैंगी के भी Ladd बहुत is on issues loan, हुए I थे, think. इंजरी issues. Ethan Ladd He's is one on of loan. the Yeah. He's on also loan. one of the Bournemouth, names. Bournemouth? Which no, I'm talking about next season where we could Yeah. see some of these players into We can the see squad. Hannibal next season, being Hannibal. integrated with the squad. Hannibal Hannibal is definitely. already in the squad. He should be there. So let's get into tomorrow's match. What squads are you predicting starting 11s against Watford? Let's Two start players are with already out. Cavani and McTominay are Pratyush. already out. Yeah, Cavani and Pratyush, McTominay are start. already out. So I think back four में Tellis will be playing and Delo or Another Bissaka most probably. Uh, I think Delo will be most probably playing because Watford are weak defensively a bit. Or So I'll give some data about Watford. They are the third highest in conceding. They are the third least in possession. So there's a reason they're 19th, right? So correct. after Roy Hodgson, they have changed the formation from 4-2-2. Attacking. They started with 4-4-2. Now they are playing 4-3-3. So It Prime doesn't Barcelona matter. tomorrow. Yeah, no. I don't see anything happening because नहीं Roy ओल्ड Hodgson, ट्रैफर्ड है तो Roy प्राइम Hodgson बार्सा तो कितना नहीं भी बनेंगे. रॉय हडसन कितना भी अपना ये टैक्टिक्स चेंज करे ना, वो हमेशा डिफेंसिव प्राइम टैक्टिक ही बार्सिलोना करता वो है. लोगों ने अपने को लास्ट मैच में दिखा दिया था जब खेले. वो दिखा दिया, वो 4-1 वाला हो गया था, वो बहुत इनफ था. So I think David De Gea starting. Harry Maguire will start, चाहे कितना भी गाली दे दो उसको, and Varane will be there and Dalot and Harris Telles. In the midfield, I will again see because McTominay is not there, so Fred is going to start and Paul Pogba and Bruno, and up front Elanga, Sancho and Ronaldo. मेरा काफी डिफरेंट है. Interesting. Mudit, you go. I'll go with, of course, De Gea. I'll start Aaron Wan-Bissaka, Varane, Maguire, and I'll start Luke Shaw. I'll take Fred, Pogba, and Bruno in midfield 3, and I'll go for Lingard, Ronaldo, and Sancho. He will rest Okay. Elanga. Yeah. क्षितिज, rest Elanga for what? नहीं, बोल रहा हूँ For देगा what? second. अरे तू देख रहे, तू देखना. देखते ना. Elanga is our most informed player. I get it. ठीक है, I get most it. informed player. Even I If want you him don't to. play your best players, No, but resting him for Atletico Madrid. बहुत दूर है. नहीं वो पॉइंट नहीं है, 3 वो हफ्ते पॉइंट. हाँ, अरे Manchester Manchester City को है ना? rest नहीं दे. नहीं आई पर गेट. मैनचेस्टर सिटी है ना उसके बाद. उसके लिए नहीं भाई, पॉइंट इज ही इज वेरी वेरी यंग, ही नीड्स ब्रेक्स. बर्नआउट नहीं होना है, बर्नआउट नहीं. Thank you, बर्नआउट नहीं करना है Pratyush. उसको, Thank you, sir. बर्नआउट नहीं करना है उसको. तो माय लाइनअप Okay. हाँ, मेरा लाइनअप ये क्षितिज. होगा: डीडीजी, डालो, मगवायर, वरान, शॉ. मिडफील्ड में वही फ्रेड, ब्रूनो, पॉग्बा. एंड मुझे स्टिल आई फील कि वील हैव रोनाल्डो, सैंचो एंड रैशफोर्ड. एलांगा को तो स्टार्ट नहीं मिलेगा, बट आई स्टिल फील राल्फ विल गिव रैशफोर्ड अनदर गो. Okay, Paritosh. Although I don't agree with it, but ठीक है. नहीं ठीक है. I think my team would be exactly the same as Kshitij. I personally also feel, given that Hodgson might be a little bit defensive, we will go with Lingard. Rashford, with Rashford and not Lingard. Baaki to I think the same team. The Dalot, Varane, Maguire, and Shaw. Fred, Pogba, Bruno, और कोई है भी नहीं. And Sancho, Ronaldo, and Rashford. I think that is the team that we are going with tomorrow. Lingard might come in tomorrow for sure. Elanga, I am not sure. He might come in even as a sub next game, unless and until we like 2-3 up. But I think I can expect Lingard to be there. Like I won't be surprised if Rashford is हाँ, sub for Lingard Lingard is as the well first sub. starting. हाँ, Lingard first Yeah. sub हो सकता है.
Yeah, that is. Start So करेगा. I'm Start gonna करेगा. share my 11 rather than the predicted 11, the squad I want to see. So I'll go with David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Lindelof, and Harry Maguire, and Alex Telles. You want Varane? You don't want Varane tomorrow. I want Varane over Harry Maguire, but then it's impossible in Manchester United that You they can't drop will the drop Harry captain. Maguire. This is your 11, no, rather than the predicted 11. So Yeah, but still. So personally, I would go with Varane, but it's just impossible. That's why I'm not including it. In midfield, I want a big change. Okay, I don't care out of the three which two centre backs start. Lindelof should be there. My personal preference. Other two are anyway doing mixed this season. तू फिल So जोन्स तो नहीं डालने वाला ना सीडीएम में अब बोलना मत. वो मैगवायर के जगह फिल जोन्स भी डाल वो देगा. नहीं 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 नहीं, ये मिडफील्ड स्टार्ट करने वाला है, ये फिल जोन्स का नाम ना ले ले बस. मेरे को नॉस्टैल्जिया नहीं चाहिए लाइफ में और नहीं. actually, Phil Jones को centre back start कराओ, still better than Harry Maguire. Yeah. So in midfield, I want to see Hannibal start. और कोई CDM है नहीं, so Fred, Hannibal and Bruno. Too early. Hannibal, I don't think even he will play a single game this season. सही में Even if शमीर भाई का कमेंट देखो भाई, जो चैंपियंस लीग में वो खेला है ना, हर टच पे गाली दी है मैंने उसे, हर टच पे. अच्छा इस पे एक Coming क्वेश्चन to my मेरा ये है. forwards, रुक जा. हाँ Forwards. बोल दे. Forwards में I want to see Ronaldo has to play. He's the only striker in the club available. Ronaldo And he wants to play. Elanga and Sancho. ओके रैशफोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन है. we have two strikers over the age of 32 जो छोड़ना चाहते हैं क्लब. Is the form of Rashford affected because he's playing on the right wing? मतलब अगर वो लेफ्ट विंग पे खेलेगा रेगुलरली तो will he improve? Look, there's an issue. There's an issue there. There's an issue there. It is not the left, position right. this season. It is not the position. उसकी injury issues भी, he had a surgery. He got back from his injury काफी fit and fine. It is something to do with his उसका mental state because he's all over the place. Yeah, I agree, but what I feel is that surgery, whatever happened, it went good and everything, but it has affected him. Like, and we have seen it in the past with surgeries. It happens And to a it's lot of natural. people. It's natural. Yeah. Like, it's just that he's so scared. Like, कभी-कभी ऐसा लगता है कि he just does not want to go into it. Like, he does not want to put himself at 100% tilt or like go into a 50-50. He's just scared. So, he's scared. no idea what happened. Honestly, it is one of the most frustrating things. Because I personally like him a lot. Like, I think, and I was happy when he got the number 10 because the way he idolized Rooney and the way he was playing football, and he's been crazy form. He's been in crazy form. He's scoring 15-20 goals. He scored 20 goals last season, right? First since Rooney for Attraction United. था उसके style of play में उसके. Yeah, exactly. Two back-to-back season. It was a Ferguson-like player, like that flair, that running down the wing, sea of red, like throwback player tha hamara. And now he just looks a shade of himself. No idea what happened, but keeping him in the team is, I don't think, good for us or Rashford himself. I think he just needs a long break. So guys, there is a breaking news coming in. We want to share it here. The three remaining, European Super League teams, they are going to relaunch their project this week, as per Telegraph, Juventus और कौन which is सा a tier 1, tier 2 source. Madrid, Perez ना वही बार्सा, मैड्रिड और यूवेंटस थे. So they will launch the project with a promise to scrape the original proposal to make certain clubs permanent members in what is shaping up to be another direct attack on UEFA's preeminence in European football. What are your takes on it? Another bullshit. इनकी वापस ठुकाई होगी. कंटेंट दे दिया ये लोगों ने. एक बात तो क्लियर है, प्रीमियर लीग की कोई भी टीम नहीं घुस रही है इसमें. विद द बैकलैश जो हुआ था, हम घुस सकते हैं जिस हिसाब से हम लोग का. I think it I won't be surprised if United becomes a part of it. No. Glazers को club छोड़ना पड़ेगा. United is like our fan base. I think is in the top 3 like crazy fan bases when it comes to standing up
for things like this. Like we pride ourselves on being I think they are the going to right team to do reposition. the right kind of They're, club. they're, they're going to reposition this league, and they will bring a proposal. I'm also against it. मैं कुछ इनके pro में नहीं बोल रहा हूँ, but they will reposition it in a way that it will be open to many more clubs. It won't be just financially. बट जो यूएफए का न्यू फॉर्मेट है चैंपियंस लीग का, वो हाँ इट इज कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट सीजन, राइट? हाँ Correct. Yeah. तो वो भी कोई मतलब इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी एट Yeah, it एट दैट doesn't. पॉइंट आल्सो। It doesn't. मतलब यूएफए भी कोई वो नहीं है कि भाई इसमें इट्स जस्ट UEFA कम करप्ट नहीं है भाई. हाँ वही UEFA is लेस the epitome of करप्ट नहीं है, corruption. करप्ट नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो these guys are rebels and they are not doing something which is a crime. They are just हाँ, fighting but- a force which is unbeatable. It's Perez- basically choosing the lesser Perez. evil. Yeah, ये of course. Perez is lesser saying कि evil, भाई तुम exactly, लोग हाँ, कौन सा लेस वर्स ऑफ दोस हाँ. टू वाला चूज करने की बात है। Perez is basically saying that देख UEFA करप्शन कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो उससे अच्छा वो जाए बाढ़ में, हम ही कमा लेते हैं पैसे. हाँ वही. करना है तो फिर ओपनली करो ना, ऐसा है हाँ, उसको, और कुछ नहीं. ओपनली करो ना, करना ही है, यही तो कर रहे हो तुम, और क्या कर रहे हो? तो ओपनली कर लेते, एक काम करो, ऐसा है, और कुछ नहीं. बट द थिंग इज क्या, बार्सिलोना को तो क्या, वो तो गरीब है, उसको तो कहीं पे भी चली जाएगा, उनको 50 पैसा रुपए तो वो आ चाहिए, जाएगा. दे रियली वांट हाँ. मनी। वो 50 रुपए देखो तो प्रीमियर लीग में आ जाएगा, उसको ऐसा बोलो 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे ला लीगा से, तो इधर आ जाएगा. ऐसा है, तो हालत खराब है उनकी. पेरेस प्रीमियर लीग का को कोई क्लब क्लाउड नहीं जा रहा है. प्रीमियर लीग को कोई क्लब नहीं जा रहा है. दैट आई कैन से. प्रीमियर लीग का कोई क्लब नहीं जाएगा. बट प्रीमियर लीग का I कोई also क्लब don't नहीं think जाएगा कि तो कोई ये जाएगा. प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट इट वोंट That's टेक the ऑफ thing. अनलेस अ प्रीमियर लीग Correct. क्लब इज इन्वॉल्वड, Yeah. एंड इट हैज टू बी अमंग द टॉप बिग फोर, वन ऑफ देम हैज नहीं, टू बी पर- इन्वॉल्वड। Yes. नहीं, पर What about Tottenham Hotspurs or Liverpool? Yeah. नहीं, वी आर फॉरगेटिंग वन Market क्लब. ability हमारे यहाँ नहीं पे भी एक चिंदी क्लब है. हमारे यहाँ पे भी एक चिंदी क्लब है जो रेड पहनता है, जो लंदन में है. वो भी जा सकता है 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो तो. हाँ वो तो ready जाएगा, वो होगा, I पक्का am pretty जाएगा, sure. हाँ. जाओ, फर्क नहीं पड़ता। उसको तो चाहिए कि भाई मेरे को बुलाओ ऐसी जगह पे, मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी ऐसा बड़ा क्लब हूँ. उसका फैन बेस playing among the big भी boys. ना उसका फैन बेस भी ना सिर्फ मतलब उतना रिएक्टिव नहीं है. बट स्टिल आई डोंट सी प्रीमियर लीग क्लब गोइंग, क्योंकि एक तो वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा इस दिस टाइम अराउंड. जैसे ही लॉन्च होगा, गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुट द प्रेशर राइट अवे. जैसे ये 3 क्लब इसके बारे में कुछ भी भाई निकालते जब भी हैं. जैसे Second- ईएसएल का हुआ था, यूनाइटेड के ओनर्स पे प्रेशर हो गया था, स्पर्स के ओनर्स, देयर वाज Correct. बहुत ज्यादा टॉक थी कि शायद इवन स्पर्स ओनर्स माइट सेल एट दैट पॉइंट। Spotify के सब्सक्रिप्शन बढ़ गए थे. हाँ वो तो आर्सेनल फैंस ने, वो तो आर्सेनल फैंस किए Yeah, थे उनके को हटाने के लिए। बट समहाउ अगर ऐसा होता है और किसी तरह से ग्लेजर्स निकल जाते हैं तो वो भी अपने लिए अच्छा ही होगा. Yeah, let's get into comments. Samir says Matic should be in starting 11. Fred was pathetic last night. Could be. मैटिच can't play. बट मैटिच Matic can't play. can't play. वॉटफोर्ड के सामने 45 मिनट्स ब्रो. 45 से ज्यादा फिर- नहीं खेल पाएगा मैटिच। हाँ, फिर हमको So it's ऐसा better लगेगा to कि bring him on after 60, 65, 70 minutes. हाँ वो परफेक्ट सब है। या क्लोज डाउन द गेम के लिए परफेक्ट है. Rewaj says I'm too late today. Yes, Rewaj, you are. भंग कर दिया रिवाज आज तुमने, आपका रिवाज. So I think for Watford, if we talk about Watford here, Emmanuel Dennis, I think will be the key player. बिगेस्ट Has scored बिगेस्ट थ्रेट। 9 times. Has scored 9 times this season. Assisted 5 times in 25 matches. Doing good. I mean, 14 G+8. It's a decent output. बिल्कुल. But Jay says बार्सिलोना कितना भी कोई गरीब है, बार्सा fan आ ट्रॉफी गया में तो लगता है। हमें बीसीएल कंपेयर अरे भाई तुम्हारा इस क्लब साल से नहीं है का ना। अस्तित्व, तुम्हारे क्लब का अस्तित्व एक बंदे के वजह से है भाई. हमारा क्लब ऐसा तो नहीं है, कम से कम जाने दो. You all came to relevance because of Messi. So stop talking about United. अब आना मत मेरे पास डेको वेको का कमेंट्स लेके, रोनाल्डिनो का कमेंट्स लेके, ठीक है? चिल मत. ओ भाई साहब। So, coming back to the Watford squad, what do you guys think? 4-3-3, Emmanuel Dennis with the most dangerous threat for United. they will go for Dennis. 4-3-3, and I think they are going to try to press us in the mid
बट वो क्वालिटी नहीं है उनके पास कि वो प्रेस करके जीत जाए हमसे बॉल. तो वी आर गोइंग टू प्ले थ्रू देयर. बाकी कुछ एक्सेप्शनल नहीं देखने को मिलेगा कल. आई थिंक वी शुड बी विनिंग मींस लाइक कंफर्टेबली. Their front three is decent, by the way. So if we speak about The Sarr, defense is shit ना. and I get it. इस्माइल सार ना, सार भी खेलेगा. Sarr है, जॉश किंग है भाई हमारा. जॉश किंग, हाँ जॉश किंग है. So Cleverly. हाँ. तो फिर क्यों साइन किया रोनाल्डो? अबे क्या बोल रहा है बे? कुछ तो क्या अलग बोल ही है रहा भाई है? भाषा फ्रांस का क्या इस बोल रहा है समय. भाई? अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकले. मेसी छोड़ के चला गया, क्या कर सकते. वो बात नहीं है इनका. वैसे अफोर्ड कर सकते तो बात ही क्या थी. रहने देता वो भी. साला खुद का रोनाल्डो को सबसे कहाँ बड़ा से क्लब लिया लेकिन है छोड़ conversation के में? चला गया. ऐसे थोड़ी होता है. मेरे को जाने पीएचडी, मेरे को जाने जो प्लीज. इधर कुछ जीत नहीं पाऊंगा. हमारा इधर चैलेंज लेके आ रहा है. ये तो बैठी बिठाई टीम में गया, उधर भी हगेगा. फ्रेड के वहाँ भी ज्यादा सिर्फ लीग गोल है. 2 लीग गोल्स हैं अभी तक. सिर्फ दो लीग अरे में 2 ही गोल गोल मारे जाने अभी दो तक. रे. गोल्स का क्या है? गोल्स असिस्ट का कंपैरिजन ये लोग ने पूरी जिंदगी भर किया. अभी झाड़ भर का इनको पता नहीं है क्या करना है आगे. कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, फिर भी चालू हो जाते कहीं भी आके. इट्स ओके. मैं नहीं बोल रहा रोनाल्डो बेटर है या मेसी बेटर है. मैं बोल रहा हूँ तुम चूती हो बार्सिलोना फैन सबके साथ. मैच प्रेडिक्शन. Score prediction, guys. रोनाल्डो स्कोरिंग. हैट्रिक. ओ भाई. ये लगा भी रहे स्कोरिंग थे, बोला मतलब वही बहुत बड़ी चीज है अभी. बहुत है हैट्रिक तो भाई. देख लेना अगले कॉल पे रिजल्ट के बाद या जो भी होगा, इस बंदे की गांड मारनी है आके, अगर रोनाल्डो ने कुछ नहीं किया तो. और मैं तो अभी से ही बोल रहा हूँ ये मिस करने वाला है अगला कॉल. 2-1 यूनाइटेड. मतलब एक गोल तो खाना ही है, ऐसा ना. खाएंगे पक्का. वो कस्टमर ही है, कस्टमर ही है. फेथ इन आवर डिफेंस टू कीप अ क्लीन शीट. जब एक बंदा ही एक परितोष भाई, अगर शॉ और मैगवायर एक साथ खेले ना, तो एक गोल लेकर चलना चाहिए. एकदम लेके ही जाएंगे वो. इसलिए उसके 2-1 बाद बैक आगे करें. खेलो. So, I think we will score 3-1. We will go 3-1. I think we'll win 2-1. Sancho brace, both assists by Bruno, and Dennis will score. सांचो का ब्रेस नहीं होगा. एक तो 1 गोल हो जाएगा उसमें. हमेशा किसी को हिट करके ही अंदर जाता है उसका गोल. हाँ ठीक है. Our Sancho has found his feet. एक गोल असिस्ट तो I can see. Yeah. Abir says emotional damage. Emotional Reward says 4-1. Damage. विवाद ज्यादा हो जाएगा. 4 गोल नहीं मारेगी यूनाइटेड. 4 गोल तो So we are joined by KS bhai at the last moment. आज आधा मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स क्लब अहमदाबाद इधर ही है. Hey, it's Ahmedabad. अहमदाबाद. यस. मतलब आधा वेटेज परितोष का है, आधा मेरा है. हो गया पूरा. क्षितिज. Sorry for क्षितिज you. तो बोल ले आगे मीत क्या बोलना चाहता है. केएस भाई रहते मुंबई में है सालों से, ठीक है, बट फिर भी अभी अहमदाबाद का बोलते हैं. है सालों से नहीं, मतलब कोविड को निकाल दो तो इधर ही थे. करेक्ट. हमने ऐसे साथ में थोड़े गोल सेलिब्रेट किए हुए हैं. अरे यूरोपा लीग फाइनल. हाँ वही एग्जैक्टली. क्रेजी. मारुआन फलानी लाइट बंद करके नाचे थे हम लोग. मारुआन फलानी के सॉन्ग में. वो भी क्या. Shamir has come in with a wild prediction. Our Fufaji will score tomorrow. कर सकता है भाई. nothing is impossible for him. He can do anything. अरे कल कॉर्नर से गोल मारेगा और फिर ये वाला सेलिब्रेशन. ऐसा वाला Cup the year. And after he celebrates, बोलेगा कि ये तो disallowed है, कोई फाउल किया था. किसी की उंगली लग गई होगी उसमें फाउल दे देंगे साले. भाई कम से कम कॉर्नर से एक गोल आ गया अपना सेट पीस से.
Be happy. 140 So now the attempts. now It took us the 140 counter attempts from corner. काउंटर रिसेट हो गया ना, अभी वापस 0 हो गया अपना. तो फिर हम 140 कॉर्नर के लिए वेट कर रहे हैं. So Correct. KS bhai, what is your prediction for tomorrow? 2-0 to us. 2-0 to United. We are left with Paritosh bhai ka prediction. 3-0. Ronaldo, Sancho, and Rashford. Rashford. Ronaldo, Sancho Rashford and scoring. Rashford. काफी बोल्ड प्रेडिक्शन है. रैशफोर्ड को मतलब 10 मिनट में गोल करना पड़ेगा, ऐसा है. कितना बोल्ड प्रेडिक्शन है देखो. रोनाल्डो का गोल बोला, रैशफोर्ड का गोल बोला और मैगवायर क्लीन शीट देगा. इससे ज्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन ही नहीं हो सकता. तुम है ना, मैगवायर along with Shaw. तुम है ना, मतलब Rashford- पूनम पांडे के ट्विटर हैंडल से निकलो, बोल रहा हूँ मैं. But नहीं, but Rashford, actually देखा जाए I don't तो think रैशफोर्ड के लिए करेगा. परफेक्ट गेम है कल. रैशफोर्ड के लिए यूनाइटेड परफेक्ट के है. लिए लो परफेक्ट ब्लॉक गेम खेलेगी, है. लो ब्लॉक यूनाइटेड के लिए खेलेगी, वो perfect. Definitely दिखेंगे ही नहीं लोग, नहीं वो जा ही नहीं पाएगा डिफेंडर तक. देखते हैं यार. I think कल लिंगार्ड को ये खिलाएंगे. होगा. लिंगार्ड is gonna start tomorrow mostly. Let's see. Let's see. लिंगार्ड को खिला भी सकते हैं, नहीं भी खिला सकते हैं. टेकिंग इन कंसिडरेशन कि रैशफोर्ड ट्रैक बैक नहीं कर रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है लिंगार्ड प्लेइंग, क्योंकि वो ट्रैक बैक करता है, डिफेंस में भी अपना देता है इफेक्ट. रैशफोर्ड का सिर्फ फॉरवर्ड जाने में भी इशू नहीं आ रहा है, इस सीजन में ट्रैक बैक में भी इशू आ रहा है, जिसके कारण अगर वो राइट विंग पे खेल रहा है, डेलो को बहुत बार देखा गया है 2v1 में वो अकेले पड़ जाता है. रैशफोर्ड इज नॉट देयर टू कवर हिज मैन. True. यूनाइटेड का लाइनअप आ गया है. 123 अगेंस्ट डर्बी. देखा. सैवेज खेल रहा है, शॉरिटी है, इकबाल है, हैनिबल है. हमने इसकी बात की कि दैट हैनिबल माइट कम इनटू द टीम नेक्स्ट ईयर. तो शोरेटर है तो ऑलरेडी ये ईयर आ गया है. तो डू यू गाइस थिंक दैट ही विल लाइक grow into the team next year, या he needs a loan? I like Shorty what है. United have. First of all, I like what United are doing with Shorty. थोड़ा उसको ला रहे हैं and then they are taking him out again and then bringing him again. So it's a good way to do it according to me. एक ही बार में rush करके कोई point नहीं है. Exactly. At the end of the season, when everything might seem irrelevant, either we are in the top 4 or we are not in the top 4, I think we could see Hannibal coming in the first team. हैनिबल कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक शॉर्टियर नेक्स्ट सीजन हमारे लिए अवेलेबल रहेगा. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उसको लोन आउट करेंगे टू ग्रो हिम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग जो है ना प्लेयर्स को, ठीक है एक्सेप्शनल प्लेयर्स आर देयर, दे जस्ट कम इन एंड दे जस्ट परफॉर्म. अमाद वो भी आते है रहते भाई, हैं. अमाद भी है. अमाद इज ऑलरेडी ऑन द लोन. हाँ वही मतलब फकुंडे भी है अपने पास. फाकुंडो का मुझे लग नहीं रहा है उतना ज्यादा कि ही विल मेक इट हियर, बट ज्यादा चांस समाद का लगता है मुझे. हाँ. और ब्रैंडन विलियम्स पैसा भी है. ये ना एंटाइटलमेंट लगता है. 40 मिलियन देख के सबको अरे लगता है कि 40 मिलियन का बात ही नहीं है भाई. ये 40 मिलियन की तेरी बात मेरी नहीं बात है. नहीं कर रहा हूँ, तेरी मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये यूनाइटेड के परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. हाँ, Otherwise, वो in चीज है which कि world- इन्वेस्ट की, हैरी मैगवायर स्टार्ट्स ओवर विक्टर लिंडेलॉफ. वो चीज तो है ही भाई. In Or an even 80 Phil million Jones. world. In an 80 million world. Exactly. आई थिंक मैगवायर कैप्टन नहीं होता तो ये हो गया होता. Since he is the captain and he's taking so much flake, Rangnick is not doing it simply out of the fact that he does not want him to take more flake for the fact that he's shit. So that is the reason. I think if he was not captain, he would have been Varane. He would have been dropped out. निकाल दिया था Yeah, उसको टीम exactly. से. Rangnick does Varane not give two Lindelof start fucks. करते हैं. Rangnick does not give two fucks, man, in his decisions, but something has held him back with Maguire. वो उसके 80 प्रेस million. कॉन्फ्रेंसेस से इट्स प्रीटी क्लियर कि भाई ही I don't think it's 80 million. I think it's his influence, like English players के ऊपर जो उसका influence है ना dressing room के अंदर. That is one of the things I think is stopping Ralph to take those decisions. Yeah, So, he needs to go, but Maguire needs to go. Like bench पे भी नहीं, क्लब से बाहर. पैसे कोई नहीं देने वाला. नहीं दे भाई, फ्री में चल रहा है. जीरो पे हम दे रहे हैं, जीरो पे दे रहे हैं. हमारा देश तो बचेगा. उसकी जगह पे कोई प्लेयर तो लेंगे जो खेलने लायक हो.
नहीं बट मैगवायर तो भाई अभी नहीं बेचेंगे ये लोग, इवन इफ देयर वाज इंटरेस्ट. We will go for 4-3-3 only. Starting with 4-2-3-1 and we are playing like 4-6 or 9-1. No, no, no. We are Basically, playing I think what he's trying 4-3-3. to say is 4-2-3-1 with either no midfielders, so like 4 attackers and 6 defenders, and या or 9 9-1. डिफेंडर्स That's एक अटैकर. Ronaldo just one person over there and nobody else. I think that is what Shamir, Shamir is trying to say. yeah, I got it. But Shamir, the thing is the different midfielders कभी कभी जो होते हैं ना, like you say 4-6, it will be better if you say 4-1. ये 4-3, बाकी तीन जो बीट के है ना वो गायब हो जाते हैं बीच में. When opposition is playing through us ना, तीनों के तीनों out of position रहते हैं, तीनों गायब हो जाते हैं बीच से. They are not there only. So on that note, let's close discussion of today. I want to share a few things here. If you are new here or you are regular here, and if you haven't subscribed, please subscribe. This helps us to get more motivation and move faster in our pace as well. ओवरऑल हमको अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारी बकचोदी ना किसी को पसंद आ रही है, ठीक है. सो इफ यू हैवंट, उस पे सब्सक्राइब पे क्लिक करो. मुदित भाई डज इट रियली वेल जो एक्ट करते हैं. मुदित भाई एक बार ऐसे मत करना. So please subscribe. When we reach to 200 subscribers, we are giving our David Beckham 2002 player edition jersey. It's a giveaway, so you just need to subscribe and chill. You might be the lucky winner. Who knows, right? Go through our socials, Instagram and Twitter. We are very, very active on Twitter. Check out our tweets. You'll love it. If you want to see what's going on in United's world, go through our Twitter. You can also go through our short videos. We are posting news every day. That's 1 minute and under. In 1 minute, you get to know all the headlines of Manchester United. So go through it. Call in your friends. Join us. Have discussions. And if you want to be here with these are our fantastic panels, and panelists. So some of these guys are working in football space, have been Manchester United followers since 20, 25 years, 15 years. So there is a lot of experience here. Come in here. We don't care if it's your first live session, just let us know through our socials and you will be here. Thank you so much for tuning in today.